था कि मैं आपकी मैनेजर से बातचीत करवाऊंगा, मुलाकात करवाऊंगा। मिस्टर अरविंद मिलेगिरी साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अरविंद जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और पहले तो आपको आपकी लिस्टिंग के लिए शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आपका बाजार का ये सफ़र बहुत अच्छा रहेगा। मैं थोड़ा सा एग्जैक्टली देखिए, अब आपके IPO को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर बहुत बातचीत हो चुकी है। पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें जानना चाहती है पब्लिक, थोड़ा सा मैं उसी पे आता हूँ। जस्ट योर आउटलुक फॉर ए स्ट्रॉन्ग बॉटम लाइन, मतलब कब तक आप प्रॉफिट दिखाएंगे, थोड़ा सा इसकी एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे। एग्जैक्टली कब तक एकस बॉटम लाइन पे एक प्रॉफिट जनरेट करेगी? देखिए, आप हमारा प्रॉफिटेबिलिटी एरोस्पेस सेगमेंट में ऑलरेडी है। हमारा यूटिलाइजेशन इन कंज्यूमर सेगमेंट इज इम्प्रूविंग, and with that improvement in the coming quarters we'll be able to see the break. When utilization gets to about 50% utilization in consumer segment, we'll have EBITDA positive, and then at about 60% utilization we'll be able to see PAT positive in the consumer segment. Aerospace segment already profitable है, PAT positive है, so दोनों मिलके profitability हो जाएगा। हमारा utilization भी aerospace में already 65 to 70% level पे है। So we combine that, we'll be able to get that. Since the capital investment for the consumer was done over last 24 months, and that is being currently just started delivering the revenue from there, is the one reason why it will take few quarters for us to show the profitability on the PAT level, EBITDA and PAT level from the consumer perspective. ओके अच्छा, ये सर रेवेन्यू मिक्स में दोनों का कंट्रीब्यूशन कैसा है, एरोस्पेस और कंज्यूमर? एंड एग्जैक्टली अगर मैं पूछूं कि अगले 2 वर्षों में ड्राइविंग फोर्स क्या रहेगी आपके लिए इन दोनों में से, और क्या ये इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे कुछ समय के अंतराल के बाद? Equally contribute नहीं होगा immediately. It will take 3 to 4 years, even up to 5 years it may take to get equal contribution, because aerospace continues to grow at least at 20%. Last 4 years, a few years we have gone 3 to 4 years we have grown at 20% level. Will continue to grow at least at that level. You know, that's how our visibility is contractually we have, and that will continue to happen. So obviously our consumer is today only 12% of our revenue, and that's going to grow faster, and it will take several years before we can our ultimate able to get to match. And our ultimate goal is to be a balanced aerospace and a consumer company. We're diversified, so that will have a better management of the business. ओके, गॉट योर पॉइंट सर, डेफिनेटली। सर मैं आना चाहता हूँ, मैं आपको कई बार सुन भी चुका हूँ, बहुत सारी अगर आप देखें चर्चाओं में आपको सुना है मैंने। बोइंग, एयरबस वो आपके क्लाइंट्स में है। डू यू हैव एनी रशियन क्लाइंट इन योर किटी राइट नाउ, और कोई पॉसिबली योजना? क्योंकि इंडिया भी जो है, भारत जो है, अभी भी रिसेंटली एक रशिया के साथ टाई अप किया टू मैन्युफैक्चर पैसेंजर एयरक्राफ्ट। डू यू हैव एनी रशियन क्लाइंट इन योर किटी राइट नाउ? Actually, our French facility used to do a superjet landing gear, and once the embargo came in for that, and we had to stop that production post Ukraine war, and it's not our policy; it's a governmental policy. If the government opens up and we can start producing that back in France, it was not done in India. And ultimately it's we follow whatever the governmental regulations are there, and our customers will dictate what they want to do, and we'll do it for them. Our capability is there to do it for all the aircraft programs around the world. अच्छा, ये सर ये पोस्ट लिस्टिंग आपका अभी मतलब इस IPO के बाद आपका नेट डेट कितना है? सिंस अभी आप कैपेसिटी अभी पूरी यूटिलाइज कर भी नहीं रहे हैं अपने दोनों सेगमेंट्स में, सो अभी हाल फिलहाल में तो आपके एक्सपेंशंस होंगे भी नहीं, सो व्हाट एग्जैक्टली योर आउटस्टैंडिंग डेट? और नियर टर्म में कोई फंड रेज का कोई प्लान की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको मेरे ख्याल से अब तो? अभी तो हमारा ओनली 100 crore डेट बच जाएगा आफ्टर पेइंग बैक द लोन। 433 crore लोन रिपेमेंट हो रहा है, and then currently we have done some capex. We want to get especially on the consumer 600 crore capex has been हुआ है last 2 years में, and that will have to get utilization up and running, and before that we can commit more capital in there. But also we have 60 crore capital allocated towards the aerospace, where we already utilization is fairly high, so we'll start using that and we'll continue to expand. ओके अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से जिन मुद्दों पे मुझे आपकी
आपके वॉइस को, आपकी बात को सुनना चाहिए था। मैंने आज सभी पूछ ली। निकट भविष्य में जब आपकी नियर फ्यूचर में फर्स्ट पोस्ट लिस्टिंग रिपोर्टिंग होगी नंबर्स की, तो डेफिनेटली आपसे बात करेंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस क्वार्टर। ये थे हमारे